Assalamu alaikum dear kids. I'm your science teacher Miss Sehrish Javed. I hope that you all are fine by the grace of God. So kids, as you know that our new session has been started and you are in grade 3 now. So in grade 3, you are going to learn about so many new things. So kids, let's see what we are going to learn today. Today we are going to learn about unit number 1, the human body. So that's mean today we are going to learn about ourselves. But before this, we will learn about the microscope. Kids, this is microscope and today we will learn that what is microscope and how does it work. But first of all, we should know the meaning of microscope. Kids, micro means very small and scope means to see. So, the meaning of microscope is to see small things. The things that cannot be seen by the human eye are called microscopic things. ऐसी चीज़ें जो बहुत छोटी हों और उन्हें आम इंसानी आंख ना देख सके, ऐसी चीज़ों को microscopic things कहते हैं. So here the question arises, अगर हम वो छोटी चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो चीज़ें हैं? That's because of microscope. Yes, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है. माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई मीन्स मेक बिगर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय द ह्यूमन आई. टू अंडरस्टैंड इट मोर इफेक्टिवली, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरस दीज डेज, द कोरोना वायरस. Kids, we cannot see the coronavirus because it's very small, right? हम कोरोना वायरस को नहीं देख सकते, वो हमें नज़र नहीं आता because it's very small. But most of you have seen the picture or structure of coronavirus on your TV screens. कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं, that is microscopic. उसे साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप में देखकर स्टडी किया एंड बताया कि कोरोना वायरस इज लाइक दिस. So besides viruses, bacteria, germs, there are a lot more things that are so small that we cannot see them by human eye. So microscope ऐसी चीज़ों को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है जो आम इंसान अपनी आँख से नहीं देख सकता. So, a microscope is a scientific instrument that makes things appear much larger than they actually are. Microscope एक scientific instrument है जो किसी भी चीज़ को उसके साइज से बड़ा करके दिखाता है. They are used to study things that cannot be seen by the human eye. और ऐसी चीज़ें जो आम आँख नहीं देख सकती, उन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं. Like viruses, bacteria, germs. Things that cannot be seen by the human eye are said to be microscopic. ऐसी चीज़ें जो आम इंसान अपनी आँख से नहीं देख सकता, उन चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक कहते हैं. Because they can only be seen through a microscope. क्योंकि उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ही देख सकते हैं. Now we are going to learn about our body. And our next topic is skin. Kids, as you know that our body is covered with skin and skin is the human's body largest organ. Skin basically different cells से बनी हुई है. Cells are just like bricks. जैसे एक बिल्डिंग या एक घर ईंटों से बना होता है यानी ब्रिक्स से बना होता है, इसी तरह लिविंग थिंग्स भी सेल्स से बनी होती हैं, यानी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सेल्स से बनी होती हैं. बट ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते. सो इन सेल्स को देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. सो हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है. एंड आवर स्किन इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स.
Kids, have you ever thought why do we have skin? क्या आपने कभी सोचा कि हमारी स्किन क्यों होती है? Skin is very important because it protects our body. स्किन बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. किससे प्रोटेक्ट करती? लाइक डिफरेंट जर्म्स से. अगर हमारी बॉडी हमारी स्किन से कवर ना होती तो जर्म्स इजीली हमारी बॉडी में एंटर हो जाते. Besides this, if we don't have skin, our eyes, our heart, our lungs, our all body organs would not be at the right place. Besides this, skin does so many different jobs. Like the skin holds everything else inside your body. The skin protects the other parts of your body from diseases. The skin makes sure your body is kept at the right temperature. स्किन हमारे सब ऑर्गन्स को होल्ड करके रखती है लाइक आवर हार्ट, लंग्स, किडनीज, आवर आईज, एवरी ऑर्गन. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्किन is that it protects our body from different diseases. Like ये हमारी बॉडी में जर्म्स को एंटर नहीं होने देती. And in this way it protects our body from diseases. Skin maintain our body's temperature. Skin हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है. Like not too cold कि हमारी बॉडी फ्रीज हो जाए and not too hot कि हमारी बॉडी मेल्ट हो जाए. So our skin kept our body at the right temperature. And of course, our skin provides us with sense of touch. We feel the touch sensation due to skin. With your skin, you can sense if something is hot, cold, hard, or soft. Skin cells are always growing. That means our skin cells keep on growing all the time. Why the skin cells are always growing? Skin cells are always growing. They need to because you are losing them all the time. Have you ever noticed कि आपकी स्किन ड्राई होकर पील ऑफ हो जाती है? Mostly on lips, on hands as well. That is basically a dead skin layer. वो layer basically dead cells की होती है. So, if the cells are dying, अगर cells die होते हैं तो उनकी जगह new cells बनते हैं. So, there is a balance between cell dying and cell growing. हमारी स्किन से जितने cells की death होती है उतने ही cells new grow करते हैं. And kids, every minute about 30 to 40,000 skin cells की death होती है. And फिर उनकी जगह new cells grow करते हैं. And most household dust is dead skin. And हमारे घरों में जो ज़्यादातर डस्ट है उसके अंदर हमारे डेड स्किन सेल्स मिले हुए हैं. So kids, I hope that you have understand the both topics. So kids, this is your first lecture homework. You have to write these questions in your neat science copies. First of all, you have to write date, day. You have to draw a neat margin line on your copies. Then you have to write unit number 1, the human body, topics, under the microscope, and the second topic is skin. No need to mention the page on your copies. Answer these questions. Question number 1, why do we use microscope? हम microscope क्यों use करते हैं? We use microscope to study things that cannot be seen by the human eye. Question number 2, which is the largest organ of the human body? Answer, skin is the largest organ of the human body. Kids, you have to write these two questions in your neat science copies very neatly. I hope that you have understood it very well. That's all for today. Take care and Allah Hafiz.